Right, so we'll be talking about blue and white ceramics, और I am sure कि सबके घर में कोई ना कोई इस तरह का पीस होगा. इनफैक्ट मेरे पास ये है और मेरी अम्मा के घर में पड़ा है. Everyone has some piece like this in their home, and so this is a very ubiquitous style. ये जो blue and white pottery होती है, ये दुनिया के हर कोने में किसी ना किसी different style में आपको नजर आएगी. So we're going to dive into the history of this particular क्या कहते हैं style of ceramics. The origins क्या हैं and what's the story. But सबसे पहले let's just go into what ceramics are basically. Ceramics जो हैं, if anybody knows about them, basically ceramics की जो base होती है, जो मिट्टी होती है जिससे बनाते हैं pots वगैरह. So it can be made of either earth, stone or glass. तो तीन तरह की होती हैं जिनको earthenware, stoneware और glassware कहा जाता है. और इन तीनों की slightly different techniques होती हैं, firing की और glazing वगैरह की. But mostly ये जो तीनों चीजें हैं, both each of these three materials are porous, जिसका मतलब है कि इनको जो है वो अगर when you fire them तो they have tiny holes in them and you can't just use them directly. अगर पानी पीना है या इस तरह की कोई मतलब they usually just absorb that water. तो उसको क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको यूजेबल बनाने के लिए people glaze them, and that glaze can be क्या कहते हैं usually it's made from some chemical plaques जो है वो क्या कहते हैं different metal oxides का जो है वो बना हुआ होता है. It also can be just clay which is very very thin जिसको slip कहते हैं, but generally speaking different जो है ना fluxes होते हैं, different chemical compounds होते हैं जिनको मतलब बिल्कुल liquid उसमें consistency होती है इसकी जिससे फिर you can either paint it or just dip the pot in and you get your glaze. And each of these metal oxides they produce different colors. ये जो blue है this is basically composed of cobalt oxide. तो ये जो blue आपको इसमें नजर आ रहा है या any of the blue pottery that you have, so this dark blue is cobalt oxide. So let's just go into their history. सबसे पहले जो है वो ये ancient Mesopotamians के time में हमें नजर आती है ये वाली pottery. And it originally started from, in the previous session I talked about lapis lazuli, कि कितना ये precious पत्थर होता था even back in the Egyptians के ज़माने में, so like 2000 BC, 3000 BC, people really admired and क्या कहते हैं desired the lapis lazuli. तो उसकी imitation में people tried to create different blues. And this was one of the blues that they found that they क्या कहते हैं came up with. It's cobalt oxide. उन्होंने जब पत्थर अपने मिट्टी के बर्तन बनाए and they just tried painting it on, they fired it तो वो उसका बड़ा खूबसूरत एक blue color निकला. And that's how it all started. और ये मेसोपोटामियन जब फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बेसिकली जो ईरान और इराक वाला इलाका है यहाँ पे इसकी सबसे पहले हिस्ट्री में नजर आती है. होते होते ये फिर चाइना में जो टैंग डायनेस्टी थी फ्रॉम द 6th century onwards to the 9th century, यहाँ पे सबसे पहले ये पॉपुलराइज हुआ इन अ वे. पहले इट वाज जस्ट अ लोकल क्राफ्ट इन द ईरान इराक वाला इलाका, बट देन व्हेन इट केम टू चाइना तो वो फिर एकदम से इट बूम्ड इन पॉपुलैरिटी. एंड ये वाली जो प्लेट है दिस इज प्रोबब्ली द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ ब्लू एंड व्हाइट पॉटरी दैट वी कैन फाइंड. ये चाइनीज मेड है और दिस इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम द 9th century. So basically, in the 8th and 9th century, China was like the at the top of the ceramics industry. Okay, उसकी जो porcelain craft थी वो बहुत ही क्या कहते हैं खूबसूरत और बहुत ही sought after थी. Like they were at the top, and everyone all over the world really wanted to क्या कहते हैं imitate that and create their own. क्योंकि obviously China से तो लाना it was expensive, it was very time consuming, and it was very rare. So not everyone could afford to, own a piece. So people started to create their own imitations. वहां से फिर क्या हुआ कि when the Muslims came into power, so 8th century में जो अब्बासी कैलिफेट थी, which was interestingly उसी जगह पे ईरान इराक वाले इलाका में बासरा बगदाद ये वाला जो इलाका था, यहाँ पे अब्बासी जो कैलिफेट थी उन्होंने फिर अपना जो है वो फिर से ब्लू एंड व्हाइट पॉटरी बनानी शुरू कर दी. And this is an example of that क्या कहते हैं style. So what they did was जिस तरह इसमें नजर आ रहा है जो एक signature उनका तरीका था, they had these flat dishes and बीच में either they had a kufic क्या कहते हैं कोई inscription थी, कोई maybe कोई word होगा, कोई अल्लाह का नाम होगा और maybe the name of the artist, या फिर कोई बीच में floral motif होगा and this, the edges were usually surrounded by इस तरह की जो है ना थोड़ी सी decorative etching. And this was very क्या कहते हैं
simple, so to speak, visually बिल्कुल simple थे. मतलब if you compare it with this is very detailed and complicated, but जो बासी से उन्होंने they kept it very like simple and minimalist. And they really perfected this technique during the 9th century. और ये वाली जो है ये फिर और ज़्यादा यूरोप में भी बिकॉज मुस्लिम्स का आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में थ्रू स्पेन काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता रहता था तो देयर क्या कहते हैं दिस वेयर बिकेम वेरी सॉट आफ्टर इन यूरोप एज वेल और फिर यूरोपियंस ने भी अपनी डिफरेंट आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन imitations as well. अच्छा अब क्या हुआ कि when people were imitating these when people were trying to come up with their own different क्या कहते हैं similar components or similar designs to this तो फिर obviously innovations भी काफी सारी हुई. And what happened was कि जब ये इसकी बहुत ज़्यादा boom हुई everywhere around the world खासतौर पे यूरोप और ये जो बॉल्कन्स वाला और जो मेडिटेरेनियन वाला इलाका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी. Then eventually जो Ottoman Empire बना तो the Turks they started their own क्या कहते हैं style और उनका फिर I have another example of a dish here. This is from Turkey and this is also an innovation yeah a different you could say an evolution of the blue and white style. तो इसमें जो है वो you can see the blue this is the cobalt and you can see the white base और जो बीच में different colors हैं ये green है ये red है और टर्कोइज है ये इन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने पैलेट में डालना शुरू कर दिए. एंड दिस वाज अ वेरी वेरी पॉपुलर स्टाइल ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी. इसको इजनिक स्टाइल कहा जाता है. दिस इज इट्स ओन लाइक ब्रांच ऑफ सिरामिक्स. सो इजनिक सिरामिक्स जो हैं वो भी बहुत पॉपुलर हुए बहुत जो है वो यूरोप में से ही इनकी शोशा हुई सब कुछ हुआ. एंड क्या कहते हैं फिर इन्होंने ये जो डिफरेंट कलर्स ऐड किए उसकी वजह से यूरोप वगैरह में भी जो उनकी अपने डिजाइन थे उनके स्टाइल्स थे उनमें भी इस तरह से थोड़े से जो है ना वो कलर्स ऐड होना शुरू हो गए बट प्रिंसिपली दे स्टक टू द दिस बेसिक ब्लू एंड व्हाइट कलर स्टाइल विद सम एडेड मतलब ब्लू व्हाइट एंड टर्कोइज ये तीन जो है ना कलर्स इसमें भी यू कैन सी कि ये हल्का सा जो है नॉट टर्कोइज दिस इज स्टिल कोबाल्ट ब्लू इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके किया हुआ है लेकिन जिस तरह इस प्लेट में नजर आ रहा है जो तस्वीर में यू कैन सी दैट दिस हैज टर्कोइज इन इट. तो ये जो तीन कलर्स थे ये बहुत जो है वो फिर पॉपुलर हुए थे स्पेशली इन यूरोप. अब हम आते हैं वापस पाकिस्तान में और ये खासतौर पे ये जो स्टाइल है इसको मुल्तानी स्टाइल कहा जाता है. इंश्योर सबको पता होगा. तो ये मुल्तानी जो ब्लू एंड वाइट पॉटरी होती है ये बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज के ये जो ईरान इराक में और तुर्की वगैरह में जो सारे वहाँ पे क्राफ्ट्समैन थे वहाँ से ये आया ड्यूरिंग द मुगल टाइम जो उधर से जो है वो क्राफ्ट आया और यहाँ पे भी मुल्तान में बिकेम दिस लाइक हब ऑफ ब्लू एंड वाइट पॉटरी और मुल्तान का अपना एक स्टाइल अपना एक सिग्नेचर स्टाइल जो है ना वो बन गया. सो इन जो इस क्या कहते हैं इफ एनीबडी कैन गेस कि इस पर्टिकुलर स्टाइल में क्या चीज ऐसी है विच इज यूनिक मतलब इफ आई शो यू दिस और इफ आई शो यू दिस देन व्हाट इज समथिंग जो कि इसमें डिफरेंट है या यूनिक है जस्ट मतलब if anyone can take some guess. Is it the flowers that they've used? I think because पिछलों में it was very edgy. There were corners and edges. लेकिन इसमें it's more rounded, more softer, I suppose. Yeah, yes, you're right. So exactly, I mean, if you look at this, so इसमें you can see there's a lot of pointiness and there's very detailed with a बारीक बारीक काम हुआ है. But if you look at this, इसमें एक तो मोटा मोटा काम भी है and yes, as you're right कि इसमें काफी गोल गोल rounded जो है ना वो हैं and also जो blue है उसके different blue shades हैं like you have a light blue and you have a dark blue. तो ये जो है ना ये मुल्तानी स्टाइल का एक वो है डिस्टिंग्विशिंग फीचर है. और क्या कहते हैं उसको. So these are some styles of different types of blue and white wear from around the world and through history as well. So let's just kind of go over them. सबसे पहले if anybody can just क्या कहते हैं pick some out इसमें से दो तीन मैंने पहले भी दिखाए हैं so I'm sure you guys can maybe take a guess at one or two. So anyone? This is a big hint by the way. You have this one and you have this one, very similar one. So the first one looks really similar. And then first row में, the fifth one looks Multani pottery. Yeah, yes, you're right. And I think last row में, the third one is also Multani.
Last one in this one. Yeah, the one in the middle. Oh, this one. Okay. ठीक Yeah. है. अच्छा. Uh, so far, that's what I gather. ठीक है. किसी और की. First, rightmost, belly row. Rightmost belly row. This one. Yep. What do you think this is? Multani. Multani style. Okay. Can you maybe identify any other? So what about this one? ये मैंने अभी दिखाया है इसी टाइप का स्टाइल पहले जो like the earlier styles. So it's quite distinctive. So it's minimalistic, and there's just one style जो कि minimalistic है. That was minimalistic in history. Anyone else want to take a guess? ये जो minimalist था, didn't you say it was like what, Chinese था क्या था? Abbasi. Abbasi. Yeah, this is basically जो मुसलमानों ने बनाया था style. This is the very first ceramics that Muslims started to basically create. So ठीक है. क्या कहते हैं? Yes, just to kind of go over these. Yes, this one is the ethnic style. ये जो है वो Abbasid style है. ये वाला Chinese style है. As you can see, it has very क्या कहते हैं like very detailed और बड़ा इसमें मतलब वो है बना हुआ है Chinese style design है. This one is Mexican. Mexican style भी जो है वो quite similar to और ये वाला this is not actually Multani. This is I think this is Flemish. So basically Ah. and yeah, and this one is Chinese. Now this one is Chinese and this one is Japanese. And if you मतलब पहली glance में नहीं इतना लगता, but then you think about it, so yes, it looks very Japanese with the क्या कहते हैं the repeating geometric pattern and the very controlled line. So this is Japanese. एंड दिस वन इज इसको कहते हैं इसको डेप्थ वे कहते हैं ये भी डच वो है डिजाइन है दिस इज मुल्तानी यस दिस वन इज आई बिलीव दिस इज पोर्चुगीज आई एम नॉट श्योर और क्या कहते हैं दिस इज इंग्लिश या सो इंग्लिश ब्लू एंड वाइट वेयर भी बहुत जो है वो क्या कहते हैं पॉपुलर है एंड इट्स अ होल लाइक कैटेगरी इन इटसेल्फ इंग्लिश पॉटरी का जो डिफाइनिंग फीचर होता है वो ये कि बिल्कुल बारीक बारीक काम है एंड द सीन्स लाइक द यूजुअली सीन्स डिपिक्टेड ऑन दीज पीसेस जो कि यूजुअली पेस्टोरल सीन्स लाइक कंट्री साइड मतलब मे बी कोई सीनरी होगी या कोई इस तरह से चर्च होगी छोटी सी और मे बी यू नो देयर सम फ्लावर्स so that is a defining feature of English blue and white pottery. इंग्लिश में विंड मिल्स भी बने हुए होंगे, काउज एंड Yeah, एनिमल्स भी yeah, बने हुए होते basically हैं. farmland. या. Just farmland of the scenery. हम्म. ये जो है ये मुसलमानों का बना हुआ है. This is I believe from Turkey. Sorry from Iran. और ये वाला जो है वो ये एक काफी recent है मतलब this is a designer piece is from Hermes. ये वाली जो प्लेट है ना इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है. So this is basically a Chinese made plate for a Muslim. और ये एक ablution plate है. It's like वुजू करने के लिए ये कंटेनर है जो it's like बड़ा सारा ये प्याला सा है और इसमें मतलब वही पानी डाल के तो इसे वुजू करते थे. This was I think from the 16th century. और ये चाइनीज मेड है. मुझे सो इंटरेस्टिंगली ये जब मैंने तस्वीर मुझे मिली तो आई कुडंट क्वाइट फिगर आउट कि ये कहाँ का है बिकॉज आई कुड सी कि ये वाला जो स्टाइल है दिस इज चाइनीज. ये वाले जो इसके ऊपर बने हुए हैं दीज लुक वेरी चाइनीज टू मी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अच्छा ये बीच में जो लिखी हुई है मतलब अरबी लिखी हुई है ऑब्वियसली दैट मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट्स वेरी कॉमनली फाउंड इन चाइनीज हिस्ट्री. बट देन व्हेन आई लुक्ड इट अप तो ये मुझे पता चला कि ये किसी चाइनीज डिग्नेटरी ने बनवाया था फॉर वन ऑफ द मतलब उनके कोर्ट में जो है वो कोई था मुसलमान तो उसके लिए बनवाया था. एंड दिस इज अ बोल जिससे वो वजू किया करते थे. So I really like this. So anyway, these are all different styles of blue and white pottery from around the world. And क्या कहते हैं as you can see I'm sure कि हर different जगह का अपना एक signature style भी है but they're all tied by that blue and white color palette. And I would just like to share a video with you guys about Multani blue and white pottery. So मेरा नाम अब्दुर्रहमान नक्काश है. फ़न नक्काशी हमारे ख़ानदान में
उस वक्त से है जब सूफ़ी यहाँ नहीं आए थे। हमारा ताल्लुक़ राजपूत चौहान फैमिली से है। हम लोग बाद में मुसलमान हुए सूफ़ी अकराम के हाथों। उससे पहले भी हमारा ख़ानदान ये फ़न नक्काशी का काम करते थे, मुख्तलिफ़ हवेलियों पे, महल्लात पे, और जो बड़े बड़े जो होते थे उस वक्त, जैसे अब शाही किले या इससे पहले जो किले थे महाराजों के, उसके अंदर नक्काशी और ख़ूबसूरती के लिए नक्काशी की जाती थी। नक्काशी दो किस्म की होती थी। एक वो नक्काशी जो इंडोर होती थी, फ्रेस्को जो गीले पलस्तर पे होती थी। दूसरी नक्काशी वो जो टाइल के ऊपर होती है, जिसको पका के धूप के अंदर और बारिश के अंदर ख़राब नहीं होती, उसको काशीगरी कहते हैं। जो अंदर होती है उसको नक्काशी कहते हैं। ये फ़न हमारे ख़ानदान में तकरीबन 900 साल से ज़्यादा अरसे से है। हम मुसलमान हुए हज़रत बाउद्दीन ज़िक्रा रहमतुल्लाह अलैह के हाथों, और इनके साथ भी पूरी एक टीम आई थी इधर। उनमें दस्तकार भी थे, उनमें काशीगर भी थे, उनमें हर किस्म के काम करने वाले लोग थे। जो लोग इस्लाम कबूल करते थे ये उन्हें ये फ़नून सिखाते थे। तो हम क्योंकि पहले भी नक्काश थे, जब हमारा ख़ानदान इनके हाथों मुसलमान हुआ तो फिर हमने इसके अंदर सूफ़ीज़म टच दिया। और आज भी आप देख रहे हैं मज़ारात के ऊपर, महल्लात के ऊपर, शाही किलों पे, हत्ता कि आप ताजमहल के अंदर भी अगर आप देखें तो नक्काश 350 साल पहले भी मुल्तान से गए थे जिन्होंने वहाँ जाके नक्काशी की थी। 5 साल की उम्र में ये फ़न सिखाना शुरू करते हैं। तो इस सिलसिले में मेरे वालिद मलिक आशिक नक्काश ने इसमें ये बड़ी काविश की। उन्होंने इस फूलों की जो सीना बसीना सदियों से आ रहे हैं, तो मिटते जा रहे हैं इमारतों से या जगहों से, उन्होंने इसको पेपर पे लाए, एक किताब की शक्ल दी, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये फ़न ज़रूरी नहीं कि आप 5 साल की उम्र में शुरू करें। अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम भी हासिल करें, और 18-20 साल की उम्र के बाद भी इस फ़न को शुरू कर दें। उन्होंने इसकी अबजद बना दी कि इस फूल को कहाँ से शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है। तो ये बहुत बड़ी काविश है कि अब कोई भी जो बच्चा तालीम के बाद, फ़ारिग होने के बाद भी इस नक्काशी को शुरू कर सकता है। जैसे ये एक पीस आप तैयार देख रहे हैं, इसको तैयार करने के अंदर 3 फैमिलीज़ होती हैं। नक्काश ड्राइंग करके देता है कुम्हार को, कुम्हार व्हील के ऊपर सेम ऐसा मोल्ड बनाता है। उसके बाद जो मोल्ड खुश्क होता है, मट्टी का होता है, उसके ऊपर से डाई उतारते हैं। डाई में से फिर कास्टिंग होती है। कास्टिंग करने के बाद फिर दबगर होता है, दूसरी फैमिली जो स्किन लेते हैं, साफ़ करते हैं, कीमा बना के इसके ऊपर रैप देते हैं उसी मिट्टी के मोल्ड के ऊपर। जैसे ही वो खुश्क होता है 4 से 5 दिन में इसको जनाब अंदर के मोल्ड को ज़ाया कर देते हैं, यानी स्टिक मारते हैं, मोल्ड टूट के ज़ाया हो जाता है और ये उसी शेप में हमेशा रह जाता है। 1910 में उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश गुजरे हैं, उन्होंने पहला लैंप बनाया जिसके अंदर लाइट लगाई। ये गुलदान की शेप भी सदियों से बन रही है। यानी लैंप जो है 1800 कुछ में इलेक्ट्रिसिटी मुल्तान में आ गई थी, तो 1910 में जाके इसका लैंप तैयार किया जो उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश। उन्होंने उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उन्हें बड़ा सराय और अवार्ड और मेडल दिए, और नवाब बहालपुर ने भी। लेकिन ये सबसे अहम चीज़ है, जो कौमें अपनी सकाफ़त को, अपनी रवायात को साथ लेके चलती हैं वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं। उसके अंदर जब हम दूसरों की चीज़ें अपनाना शुरू कर देते हैं तो 1-2 नस्लों के बाद ये होता है कि लोग समझते हैं कि ये शायद ये फ़न इस इलाके का नहीं, ये तो उस इलाके का है, क्योंकि अपनी शनाख्त हम खो देते हैं। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी शनाख्त, अपनी रवायात, अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखें जिद्दत के साथ। अब उसमें तब्दीलियाँ लाएँ। लोग पुरानी चीज़ें देख के भी थक जाते हैं, अब आप शेपों में तब्दीलियाँ लाएँ। अब आप लैम्प शेड जो बना रहे हैं या बिल्डिंग वर्क में जो काम कर रहे हैं, फूल तो नक्काशी तो मुल्तानी होनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर कलर स्कीम्स, कुछ शेपें, कुछ मॉडर्न ले आएँ, ताकि उस रवायत को लोग नए तरीके से भी पसंद करें। इस तरह हमने किया है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। Acha, so that was it, and I hope you guys enjoyed. If you guys have any questions, any comments, so please. This was actually quite interesting because I did not realize how many different countries and cultures were using those blue colors for blue pottery की कितनी variations हैं culture to culture. That was I had no idea.
because there's like so many plates, Chinese, British, Japanese. Beautiful. Makes you want to collect them. है ना. मजे की बात ये थी कि मैं जब ये स्लाइड्स करी ना तो मैंने कहा यार आई आई नीड टू हैव सम लाइक फिजिकल पीस इन माय हैंड. तो मुझे याद आया कि यार अम्मा के पास बहुत सारे पड़े हैं. कैसे वहां जा जाती है ना कहीं से ब्लू एंड व्हाइट मुझे पता था कि मिलेगा. एंड आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंड आई हैव टू पीसेस विद मी. सो यू नो मतलब इट्स समथिंग जो कि आपको डेफिनेटली मिल जाता है फ्रॉम एनी वे. यू गो टू इंग्लैंड, यू गो टू मेक्सिको, यू गो टू फ्रांस, यू गो टू मतलब जापान, हाँ. यू कैन फाइंड इट एनीवेयर. कोइंसिडेंटली मेरे पास भी ना घर में हमारे पास रेक्टेंगुलर डिश छोटी छोटी ट्रे टाइप सी हैं, और वो हमने इसलिए खरीदी थी कि हम इसके ऊपर डंपलिंग सर्व करेंगे. तो इतनी इतनी सी है, कुछ छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसमें डंपलिंग्स रखते तो बड़ा क्यूट लगता है. मैं कभी तस्वीर लेके भेजूंगी. Yeah, nice. अच्छा, anyone else? किसी और का कोई सवाल, कोई कमेंट? अगर नहीं है तो फिर we can then just no. Okay, thank you everyone. I hope you guys enjoyed. और थैंक यू. Thank you. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.